6 बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्न आदम के हजूर खड़ा होने का मकसद हासिल हो। हालेलुया। इसके साथ ही हम देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब वर्स 1 to 14। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए कि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्द अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह भूचाल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू भी होंगी। उस वक़्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम से सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक़्त बसेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आज का जो हमने देखा वर्ड्स पढ़ेगा कि जब आखिरी वक्त आने वाला है, are we ready for the end of the world? End of the world is coming soon. Are we ready? Ready for the end of the world? If yes and no. Because we have been hearing this word for a long time. हम बहुत देर से ये आवाज़ सुनते आ रहे हैं कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। कौन जानता है क़यामत कब आएगी? सिवाय खुदा के, खुदा उसके सामने बेटे को भी मालूम नहीं। Son even doesn't know when the time is coming. He said, only my Father knows when is the end of the world. जब दुनिया का आखिर होगा तो उस वक्त सिवाय खुदा के और कोई नहीं जानता। क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं आखिरी वक्त के लिए? क्या निशानियां हैं? What are the signs that Jesus gave it to us that we have to prepare ourselves? खुदा ने हमें कौन कौन से वो निशानात दिखाए हैं और वो बताए हैं कि हमें किन किन चीज़ों के लिए तैयारी करनी है कि हम आखिरी वक्त को जन्नत के साथ हेवन में अपने खुदा यीशु मसीह के साथ जाएं। When Jesus was sitting on the mount of Olives, the disciple came to him privately. Tell us. And they said, when will this happen? And what will be the sign
of your coming and the end of the age. ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو ہمارا جیزس ہے، ہمیں بتا دے کہ یہ کب باتیں ہونے والی ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا جیزس سیڈ I don't know, only the Father knows, but he gave them some signs. اس نے ان کو کچھ نشانات بتائے کہ تم اپنے آپ کو how to prepare yourself، ہمیں اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، کون کون سی نشانیاں ہیں، کون کون سے نشان ہوں گے۔ نے کہا many people will come on my name. Everybody will say, go to this church, go to that church, that Jesus is there, but don't believe in them. Just see yourself، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہ کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے، کیونکہ جھوٹے نبی بہت کھڑے ہوں گے، ان کے پاس پاور ہوگی، جھوٹے نبی جو false prophet ہیں even though they have the power to do the miracles، وہ بھی بہت سارے نشانات، عجیب کام اور معجزات کریں گے، کیونکہ خدا نے ان کو پاور دی ہے، اور خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ہر کسی پر ایمان نہ لانا سوائے خدا کے بیٹے اور خدا یسوع مسیح پر جو ہمارا خدا ہے، اسی کو ماننا۔ اس نے کہا اور کیا ہوگا، اور ہوگا there will be many wars. You will see many wars and you will hear of wars. Yes. بہت ساری لڑائیاں ہوں گی اور تم لڑائیوں کی افواہ سنتے، آپ ہر روز سنتے، ایوری ڈے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں لڑائی جھگڑا یا وارس نہیں ہوئی۔ One country getting against other one to another because there are so many false prophets. You will see many wars. میں نام نہیں لینا مانگتا، نام تنگ کر رہا ہوں۔ ہر روز فیس بک نیوز ہر چیز دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں لڑائی ہو رہی ہے، where the fighting is on۔ لیکن تم گھبرا نہ جانا، don't be scared. These are not the end of the world. یہ دنیا کا آخر نہیں ہوگا، لیکن اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج ملے گا۔ اور کیا نشان دکھایا کہ one nation to another nation، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی قومیں ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، ہر قوم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتی ہے۔ کرسچن اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہندو they believe they are the only one who will be saved. Muslim say no, we are the only one that you say if we kill one infidel، اگر ہم ایک عیسائی کو جو خدا کے ماننے والا ہے اور ایک یہودی کو، جیوز کو جو خدا کی قوم کا، جو خدا کے پیاروں کا، ان کو ایک کو ماننے والا ہے تو اس کو بہت سارا انعام جنت میں ملے گا۔ Nation, one nation to another nation. A nation, one nation will rise. They will rise one to another. ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، وہ بولیں گے کہ نہیں تم بہتر نہیں ہو، I am the better one than you. Then there another sign, there will be famine. آج آپ دیکھتے ہیں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، ایک چیز لینے کے لیے جائے، دو چیز لینے کے لیے جائے $100-200 اس خاص because the two met famine. کئی جگہ تو ایسے ہے جہاں پر فوڈ ہی نہیں ملتی۔ ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک خوراک مل رہی ہے، we are thank God that we still have the food, but there are some places there has no food, no
water, no anything, nothing. They have एक दूसरे पर there will be another sign. There will be earthquake. There will be many earthquakes, and it comes every day. Every day we hear in the news. Today there was an earthquake in San Jose, earthquake in San Francisco, earthquake in Pakistan, India, Turkey, wherever. You all guys know, everybody knows where our earthquakes are coming. Before that it was also coming, but they were coming once in a while because that was way beginning. But now it's getting end of the world. जब हम छोटे थे हम सुनते आ रहे हैं कि क़यामत आने वाली है. उस वक्त इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था. अर्थक्वेक भी आते थे, महंगाई भी थी, और भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन कम थी. अभी क्या है, अभी बढ़ते जाते हैं. अभी जो जैसे जैसे खुदा नज़दीक आता जाता है मुसीबतें बढ़ती जाती हैं. जो हमारी जो अर्थली पेन्स हैं, अर्थली दुनियावी बातें हैं, वो बढ़ती जाती हैं. अगर हम अर्थली बातों को, अर्थली पेन्स को देखें तो कितने हर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है. हर जगह अर्थक्वेक आ रहे हैं. अभी आपने पिछले दिनों में देखा कि पाकिस्तान में, इंडिया में कितना बड़ा तूफान आया. बहुत सारे. There are so many people who died. The animal died. Crops got destroyed. Houses got destroyed. Why? Because it's end of the day. It's getting more and more and more. Every day, ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है. These are the beginning of the sign. ये शुरुआत है. अभी इन साइन जो दिए गए हैं ये इनकी शुरुआत है. ये अभी शुरू हुए हैं. लेकिन कहते हैं कि तुम घबराना जाना. ये दुनिया घबराना जाना. It's not the end of the world. ये दुनिया का आखिर नहीं होगा. जब खुदा यीशु मसीह आएगा, when he will come, then every eye will see him. He will come to the cloud and his nursing out. Come on. The gospel of the kingdom will be preached, or Sinai will be preached in the whole world. उसके आने के हर जगह जो है खुदा की प्रीच की जाएगी. आप देखते हैं कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वो सारे लोग कितने क्राउड्स जमा हो रहे हैं. वो खुदा को अपने नज़दीक ला रहे हैं, खुदा का पैगाम फैला रहे हैं. इधर मुसलमान और हिंदू और सिख उधर वो क्लैश कर रहे हैं, इधर क्रिश्चियन क्लैश कर रहे हैं आपस में. They are one nation getting to another nation. One nation rise to another. लेकिन कौन जीतेगा? खुदा का. क्योंकि खुदा ने कहा कि मेरा पैगाम, my message will be on every tongue before he will come. उसका खुदा का पाकलाम जो है वो हर एक ज़ुबान पर होगा जब उसका आएगा. और कौन देखेगा? आसमान पर सितारे उसका हो जाएगा, फिर हो जाएंगे और सब नूर चमकेगा और हम देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी. Whole world will see. Not only America, not only Pakistan, not only India, but every world. दुनिया में सारी दुनिया जो है वो उसको देखेगी. तो क्या होगा? ये जब ये सारी चीज़ें उसके पूरी हो जाएंगी तो क्या होगा? अचानक जो है इसके साथ ही after this, this will immediately after the distress of these days, sun will be darkened. सूरज जो है उसकी रोशनी कम हो जाएगी. The moon will not give light. देखा अपने मून को कि कितनी बार ज़मीन आसमान के गिर्द घूमती है और कई दफ़ा ग्रहण लगता है. बहुत लगते हैं. पहले कभी हम सुनते थे
کہ چاند گرہن لگا ہے. ابھی آج ہر روز سنتے ہیں کبھی کس ملک میں چاند گرہن لگا ہے, کبھی کس ملک. انوائرمنٹ کبھی کدھر گرمی ہے اور کدھر سردی. جو سن ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا. Sun will be the dark and moon will not give its light. Stars will fall from sky. آسمان سے ستارے گریں گے. ایسا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں, ہر روز دیکھتے ہیں, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ستارہ کو گرا ہوا تو اس کے تو دو کیا نام ہے. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ستارہ گرتا ہے تو گڈ لاک ہے, اور ایک جب ہم ستارہ دیکھتے ہیں تو وہ بیڈ لاک ہے. There are two concepts, not a concept, whatever we call that, cultural thing. There are two things. When we see the stars falling, we see it is a good luck. But when we see, sometimes we see the star is falling, it's a bad luck. So all these signs we have to think about, is it my good luck or is my bad luck? ہمیں اپنے آپ کو, these are the signs, these are the stars will be falling from sky, these are the biggest signs of the end of the world. And the heavenly bodies will be shaken. جو آسمانی قوتیں ہیں, جو آسمان سے وہ ہلائے جائیں گے. تھنڈر, یعنی بہت سارے آپ نے دیکھا, بہت سارے تھنڈر. پاکستان میں کیسا ہوا, اپنے مریم میں سنا, پاکستان کے ایک مریم میں ادھر ایسا بادل پھٹ گیا. There was that much thunder that the stones they were like maybe 30 one, like how many pounds they were. Big all stones are rolling, گر رہے تھے. اتنی زور کی بارش ہوئی اور بادل گرجا. اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا, یعنی کہ کل دیکھا کہ لاس اینجلس میں بجلی گری ہے اس کا. اینڈ دیر از اے فائر آن دا پام اسپرنگ ایریا ان لاس اینجلس. دیکھو پہلے تو گرمیوں میں آتا تھا کہ ہر جگہ آگ لگی ہے, there are fires everywhere. Now it's getting very cold. There's no rain, but there was a big storm in LA, and there were so many palm trees that burned, and bijli un par giri. So these are all the signs. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کیا کیا سائن ہے, اور ہم نے سنا اور ہم بائبل میں پڑھتے بھی ہیں. کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں, کیا ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں. Are we ready for this one? When these signs are coming close to me, they were far, but now they were away from us. Now it's coming close. دیکھو ہم اتنے سال سے, ہم 70 سال کے ہو گئے ہیں, 50 سال کے ہو گئے ہیں. جب بھی پیدا ہوا اس نے ہم یہی سنا کہ قیامت آ رہی ہے, جلدی آ رہی ہے. Now it's coming close, and one day nobody knows when the time will. So we have to get ready before it happens. Are we ready? If not, then we have to prepare ourselves. It is the time now. It is God. He is giving us time. He says, okay, all right, not today, not tomorrow. Ask Lord to help. خدا سے معافی مانگو کہ خدا آپ کو بچائیں, آپ کی عقل. God will give you some wisdom to understand His verses. It's the same, whatever the Lord said, whatever He
He sent His Son. And His Son told us, but these things will be happening. Yes. But Son doesn't know that when it will happen. हम अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों को हर चीज़ बताते हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो बच्चों को भी पता नहीं होता, कुछ बातें सीक्रेट भी रखी होती हैं। खुदा ने ये बात पोशीदा रखी है, उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जीसस भी एक इंसान की तरह ही केम एज ए ह्यूमन बीइंग। वो इंसान की शक्ल में खुदा यीशु मसीह हमारा आया और वो हमें तैयार करने के लिए आया। He came in this world to prepare us that how we can live. I'm telling you, this will happen, this will happen. ये निशानात होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कब क़यामत होगी। Only Jesus knows. Jesus told, give us the guidance to prepare ourselves. जब उसके शागिर्दों ने जीसस से कहा कि हमें गाइडेंस दो, हमें बताओ, और today we need a guidance, but if we read the Bible we get the guidance. If we listen to the Bible, read and think about it, these are the guidance of the end of the world. हमें चाहिए. I'm asking everybody to get yourself ready. हर एक से यही कहूँगा कि अपने आप को तैयार रखें। हमें मालूम नहीं है कितने साइन जहाँ हुआ पूरे हो रहे। अभी पिछले दिनों मैं नासा से बात कर रहा था कि there will be a rupture. There was something on the YouTube or somewhere that on the 23rd September will be rupture. I thought we'll go to church, one will be taken away, and one will come home and one will stay. So we don't know what will happen. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक उठाया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा. So we have to prepare ourselves. God, I want to take me. मुझे छोड़ ना जाना, मुझे ले जाओ. I'm ready. अगर हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और if we believe on Bible, believe on God's word, तो हमें अपने आप को अपने गुनाहों का इकरार करना, इन बातों को मानना. मेरा यही आज का 5-10 मिनट के लिए छोटा सा सरमन था कि अपने आप को तैयार करो. Now I'm gonna ask our bishop to give us more guidance.